Welcome aspirants, welcome to SRIRAM IAS. My name is Saurabh, and in this series of Indian Society for Mains 2025, this is the fourth lecture. In the initial three lectures, I have discussed migration, secularism, communalism, and in today, the fourth lecture, we are going to discuss a very important topic, and that is regionalism in India. Is it a Bane? Is it a Boon? Is it a mix of two? Yes, we will analyze it. We will see what exactly is in this lecture. What are the causes of regionalism in India? Is it simply a local phenomena, or it is playing out in the national stage or at even an international stage? इसके क्या consequences होते हैं? So we will have a 360-degree view on regionalism and exactly how it is spanning out as we speak in contemporary India. Because these days in UPSC mains, you see, they are asking you contemporary questions, even though के topic आपको feel हो सकता है कि static portion से regionalism एक static portion है, लेकिन the way they are asking, the context of it is obviously contemporary, and that is why your answers should be very contemporary and innovative. तो इस तरीके से इस लेक्चर को हम समझेंगे. Now, what exactly regionalism is? Any ism is an ideology. Any ism is an ideology. So here we are talking about an ideology which is built around what? A region. Region, is it a geographical region? Is it a cultural region? Is it we are talking about on the basis of language or food choices or clothing pattern? What exactly we are talking about? So it's a clustering of all environmental, economic, social, and governmental factors. So we are talking about a particular area जहाँ पे लोग रहते हैं who have commonalities. Maybe it could be language, it could be roots in history, it could be climatic conditions, it could be political ideology, it could be a common sense of distrust in the government, it could be a common sense in destiny also. So the people who are in a way have a shared consciousness. तो उस पर्टिकुलर रीजन में जब ऐसा डेवलपमेंट होता है विद इन द माइंड स्पेस ऑफ द पीपल, उसे हम बोलते हैं रीजनलिज्म. रीजनलिज्म उसे हम बोलते हैं. इट्स ए फीलिंग. सो डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है ऑफ ए सेपरेट आइडेंटिटी. उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है. नाउ इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री. सिविलाइजेशनली वी आर बीन ए वेरी डाइवर्स कंट्री. You name it, any particular dimension of diversity which is present in the world, and India will obviously come at the top of that list. So caste, class, creed, faith, ethnicity, language, political beliefs, you name it, and we will have diversity in that area. The differences among our people have always been there, but fortunately those differences had less of the chance to become disputes in the past. लेकिन कभी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो इंडिया हैज बीन ए स्टोरी ऑफ व्हाट? कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड vigorous struggle for decentralization. Politically, we have been like this. So in India, we've always seen this is being told by our historians that we have been a fragmented polity most of the time in our history, but we have been a unitary culture. कल्चर हमेशा से पूरी सिविलाइजेशन का एक रहा है, जिसको हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू, he has written in his book Discovery of India, it's an invisible thread which connects our country. Now, एक geographical unit, एक social system, it reflects the relation between different human beings and groups in that particular region. So they have a common sense of purpose, they have a common sense of destiny, they could have a shared set of grievances. So the people in Telangana, they had a common sense of destiny that they belong to Telangana state, and that is why they were fighting for a separate Telangana state, and they got it in 2014. Northeastern region in India, as a collective whole, the 7+1, 7 sisters plus 1, they have this thinking that they are different from the mainland India. Some groups inside Punjab may feel that they are different from the rest of the state and rest of the country as well. So caste and religion sometimes fuse
together and develops itself into regionalism. It acts as a subject with distinctive identity, language, culture, and traditions. So custom, norms, behavior, beliefs कई बार अलग होते हैं और वहां पे अलग होना सिर्फ मायने नहीं रखता. इंडिया इज वेरी डाइवर्स. हर 50 किलोमीटर में यू फाइंड द फूड गेट्स चेंज्ड, यू फाइंड द डायलेक्ट gets modified. That's not an issue. Indian differences are a given thing in India. The issue is that a shared consciousness developed around that differences, on those differences, and then collective mobilization takes place. वो हमारे लिए रिलीजियनिज्म बनता है. So an ideology, an ism is an ideology centered around a region by which people feel a sense of commonalities. कॉमनैलिटी का कुछ भी वेक्टर हो सकता है भाषा के आधार पे, जैसे तमिलनाडु में समटाइम्स you may have an idea of your region that it may have a separate culture or identity, और बाद में वो नेगेटिव कनोटेशन ले जाता है. जैसे सेशनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में चले हैं, that Kashmiris may feel there is an extremist section in there fueled by Pakistan, that they have felt that they belong to a different culture and civilization altogether different from India. So ये जो idea है regionalism का, that is why it's very very important and questions have been asked surrounding that issue. Now furthermore, it is not something which is exclusively common to India. At international level also regionalism होता है, जो कि refers to transnational cooperation to meet a common goal or resolve a shared problem. The people or the countries here feel a sense of commonalities. The region, South Asia region, Indian subcontinent, they have gone and built a organization for themselves, SARC, SAARC. Unfortunately, this is dysfunctional because of Pakistani cross-border terrorist activities, but it has been a symbol of what? South Asia, Indian subcontinent. Southeast, जो हमारा South Asia है, उसका एक political grouping है. ASEAN is what? साउथ ईस्ट एशिया में एसोसिएशन बनाया गया फॉर कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज. एंड सो यू हैव एरियाज लाइक अफ्रीका, यू हैव लैटिन अमेरिका, यू हैव वेस्टर्न यूरोप, जहां पे कंट्रीज हैव गॉन फॉर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. यूरोप में यूरोपियन यूनियन है एक, जो कि क्या है, एक रीजनल कोऑपरेशन का मैकेनिज्म है. तो वहां पे भी ऐसे ही development हुए. Now the question comes, should be as a, on a principal basis, should be regarded as an unhealthy or anti-national phenomena? Is it a bane or is it a boon? So after the discussion of the entire lecture, you will have a comprehensive understanding on it कि whether it is a bane or is it a boon. तो इसको हमें पहले डिटेल में समझना होगा. Exactly इसको हम अप्रोच करेंगे. पहले हम शुरुआत करते हैं कॉजेस के साथ. व्हाट कॉजेस रीजनलिज्म इन इंडिया? क्यों लोग अपने आप को दूसरों से डिस्टिंक्ट मानते हुए मोबिलाइजेशन की तरफ जाते? पहले होती है आइडेंटिटी. इनिशियली यू गेट व्हाट? आइडेंटिटी. आइडेंटिटी होती है, एंड देन यू गेट व्हाट? शेयर्ड नेचर ऑफ दिस आइडेंटिटी. Shared nature of this identity, and then on the basis of this consciousness that they have been developed, उसके बाद होता है mobilization. People protest on the streets, people come together and indulges in what? Violence. So this is in a way geographical spread India का बनाता है, इंडिया में regionalism का एक cause बनता है. That India is very diverse. We have almost more than 24 states and union territories. गांधी जी कहा करते थे that India is not a country in natural or normal sense. It is a nation in making. We have been a civilizational nation state. जैसे आप UK और फ्रांस, ये nation है. They have been built around a common identity. They speak one language. They have almost in the previous centuries they had followers of only one religion. तो वो नेशन है. इंडिया वॉज अ सिविलाइजेशन जहां मल्टीपल नेशंस एग्जिस्ट करते थे. दे हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर. तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड इंडिया का इतना लार्ज है. इट्स अ बिग कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इवन आफ्टर bifurcation in 1947, after the partition, still India is a very very hugely big country.
तो इतना बड़ा लैंड मास है। इसकी वजह से डाइवर्सिटी हर तरीके की है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी। यू हैव ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटो, हिमालयन एरियाज, गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस प्लेन्स, डेजर्ट इन राजस्थान, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। सो क्लाइमेटिक भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, कहीं स्नोफॉल होती है, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। तो ज्योग्राफिकल जो स्प्रेड है अपने आप में रीजनलिज्म का बहुत बड़ा कारण बनती है। इट्स ए कॉमन कंप्लेन which mostly come from Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, that the Indian leadership, particularly the Prime Minister level, when they go in the state of Tamil Nadu for some attending some function and all, they have to speak English because geographical spread इतना ज़्यादा है कि the languages and the cultures जो एंटिक्विटी से जिनका एक्सपेंशन हो रहा है वो लिमिटेशन वहां हमेशा बनी रहती है। तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत बड़ा रीजन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया feel different from the rest of the Indian mainland. Why? Because geographical एक distance है, you have to accept it. It is there. दूसरा, historical reasons बहुत ही important हैं. As I said, in India, the entire history can be summarized in one sentence, that it's a continuous struggle for centralization and vigorous struggle for decentralization. How many empires we can think of जो सेंट्रलाइज्ड रहे हो, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया का लैंडमास आ गया हो? यू कैन थिंक ऑफ, यस, मौर्यन एम्पायर। दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर जो कि सेंट्रलाइजेशन जिसमें किया गया। अदरवाइज जो एरा था मौर्यन एम्पायर से पहले वो किसका था? महाजनपद्स का। अवंती, कौशल, मगध, मत्स्य, these were what? Mahajanpads. So there were Janpads, 16 of them, which we have historical records in Puranas and other texts. Mauryan Empire was the first centralized empire in the sense that they have a vast area under their control. जब वो कोलैप्स होते हैं उसके बाद अगर आप देखें उनके लेवल का एम्पायर, उसके बाद बहुत सारे सतवाहनास आ जाते हैं, देन यू हैव शुंग एम्पायर एंड ऑल. सो all are there, but not comparable to Mauryan Empire. Not comparable to Mauryan Empire. By the time of Harsha, you can say, in 6th century, that he had गुप्ता एम्पायर, यस, उसके बीच में फिर अगर आप देखें तो फिर भी एक्सटेंट मॉडर्न एम्पायर के बराबर नहीं होगा. इन दिल्ली ऑल्सो व्हेन द टर्किश एंड अफगान इन्वेडर्स केम, इनिशियली दिल्ली सल्तनत वाज आल्सो नॉट एज बिग एज मॉडर्न एम्पायर. वहां पे भी अगर आप देखेंगे मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट करते रहे. उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल एम्पायर वाज व्हाट? मुगल्स. व्हेन मुगल डिक्लाइंड, again there was decentralization, again there was rebellions, again there were grievances. उसके बाद एक discontinuity हुई few decades later, and then Britishers arrived and they built what? British India. तो historically अगर आप देखें, because of the geographical reasons and because of the idea in India, the differences are there, differences are definitely there, और जिसकी वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड है वो बढ़ती है, आइडेंटिटी बेसिस पे वो भी बढ़ती है. हिस्टोरिकल रीजंस यही बताते हैं. तो आप सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जब जाते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड उठने लगती है, और ये हमारी हिस्ट्री हमें बताती है. कल्चरल फैक्टर्स भी अपने आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अभी भी हम देख रहे हैं कैसे जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसको लेके भी there was a lot of dispute on the 3 language formula. Recently Maharashtra state has withdrawn its circular for Hindi to be taught in schools in Maharashtra. तो लैंग्वेज को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजनलिज्म का एक कॉज बनता है, एंड पीपल हैव दिस नोशन ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी अराउंड लैंग्वेज. Economic reasons are very, very important throughout the history also, and in a modern contemporary India as well. People have this sense of being cheated, that their resources are being taken away, they are not given sufficient resources by the Union of India, और उनका एरिया जो है अंडर डेवलप्ड है, उनके एरिया को प्रॉपर फाइनेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगाई जा रही हैं. सो दिस इज अ कॉमन कंप्लेंट दैट यू हैव दीज डेज, बिकॉज सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम गुजरात, मेनी पीपल कंप्लेन कि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं गुजरात जा रहे हैं.
कोई भी नया प्लांट लगना है, चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो या इसरो का हो, वो गुजरात जाएगा. So this idea that naturally comes. Economic reasons are very, very important. Industrialized states in India, many of them like Tamil Nadu, like Gujarat, Maharashtra, they complain that their revenues are being taken away by the union government and then being spent where? In Bihar, in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh. इकोनॉमिक रीजंस बहुत ही जो ब्रेड एंड बटर के रीजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बनते हैं रीजनलिज्म के इंडिया के अंदर. उसके अलावा नेचर ऑफ कास्ट. कास्ट have been described in variety of ways. So caste we can describe also as an extended kinship group. लेकिन caste के साथ एक चीज हमें याद रखनी है, it is also regional in nature. So Marathas as a caste are found majorly where? Maharashtra. Gurjars or Jats will be found where? In a state of Haryana, a state of some parts of Rajasthan, Western UP. So Jats are also what? Regional in nature. Marathas are what? Regional in nature. Reddy, Kamma, what? Regional in nature. Yadavs, regional in nature. तो ये रीजनल है, नेचर ऑफ कास्ट भी रीजनल है, कुछ रीजन्स में ये बसे हुए. इन मेनी ऑफ द केसेस it get fused with what? Religion. So in case of Punjab, the religion is what? Sikh religion, Sikh faith. और वहां जो डोमिनेंट कास्ट है वो है जाट. तो जाट सिख, it's a fusion of what? Caste and religion. Or then you have this separate identity that on the basis of that, unfortunately in the past we have a secessionist movement जो कि आज भी डायस्पोरा के बीच में चल रहा है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस में. खालिस्तान का मूवमेंट वो क्या है? Caste fusing with religion. Then you have political and administrative factors as well. Sharing of power, the idea of autonomy, idea of decentralization, idea of penetration of the democracy. यहां से निकल के आता है that they are not getting proper representation in council of ministers. They're not getting proper due share in power. तो ये भी रीजन जो है रीजनलिज्म का बनता है. एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी बनते हैं. द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, if he stops certain bills from being passed, if he doesn't sign, the bills will not be passed. तो वो विवाद का विषय बन जाता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजंस भी, फैक्टर्स भी रीजनलिज्म का कॉज बनते हैं. इट्स अ सीरियस इशू हियर इन इंडिया. तो जो कॉजेज है रीजनलिज्म के, दे आर सेपरेट, दे आर लिंक्ड, they move together. Sometimes 3 or 4 factors continuously are working upon them. अब जैसे स्टेट ऑफ, अगर आप पंजाब की बात करें, स्टेट ऑफ पंजाब, particularly if you see in 1980s, what was happening there? The leaders of the Khalistani movements were used to claim on those decade particularly that the Punjab state was the one of the most developed state in India. They were generating a lot of revenue क्योंकि उस वक्त इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर फोकस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी थी. तो सारा रेवेन्यू जो मैक्सिमम है वो पंजाब से आ रहा था. अब वो ये क्लेम कर रहे थे कि पंजाबी जो रेवेन्यू है, पंजाबी जो लोग पैसा कमाते हैं, द पंजाब स्टेट इज अर्निंग दैट मच ऑफ मनी एंड दैट मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड वेयर? इन टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, एमपी एक्सेट्रा. Economic factors, they used to claim historical reasons as well, that Maharaja Ranjit Singh Empire was separate and distinct. So historical reasons, cultural reasons, their language is different, the script is different, economic reasons were there, caste and religion ka fusion, political administrative factors was also there, that the government of India is discriminatory against them, excessive use of force is being deployed, many such grievances, layers of grievances were there. तो ऐसे रीजनलिज्म का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है. जो कॉजेज हैं उसके ये बनते हैं. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया. तो सुप्रा स्टेटिक रीजनलिज्म है, लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मल्टीपल स्टेट्स आर हियर, लाइक Dravidianist movement, which claims sometimes in an extreme and absurd form that all the states of southern India, they are Dravidian states, even though it ignores all the diversity which is present there and takes a negative connotation many a times. तो सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म ये होता है. एक होता है इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म.
Intra-state, within the state it is happening. So Vidarbha may feel discrimination vis-a-vis rest of Maharashtra. Kutch region of Gujarat may feel discrimination vis-a-vis rest of state of Gujarat. There have been demands to cut Uttar Pradesh into four. There have been demands of Gorkhaland because they feel that they are being discriminated in the state of West Bengal. तो इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म भी इंडिया में है और जो डिमांड उठती है डिफरेंट स्टेटहुड की इसीलिए उठती है. Then you have interstate regionalism, which is the most common form among the states, between the states. ये जो टाइप है, this is the most dangerous one that you have. There are variety of reasons upon which ये regionalism dominant होता है, जिनमें से सबसे पहला अगर आप देखने जाएंगे तो वाटर के इश्यूज हैं. कावेरी वाटर डिस्प्यूट फॉर एग्जांपल between the state, primarily between the state of Karnataka and Tamil Nadu. Satluj, जो यमुना लिंक कनाल है between हरियाणा and Punjab. Kaveri and Krishna and Godavari between Telangana and Andhra Pradesh. Recently, the Andhra Pradesh government announced that they are building a dam or shifting water from one area to another, and Telangana protested on it. वाटर रिसोर्सेस का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वाटर स्ट्रेस भारत के अंदर बढ़ रही है. उसके अलावा लैंग्वेज का इशू बहुत ज्यादा बनता है. लैंग्वेज दैट वी हैव सीन दैट पीपल आर बीटिंग हिंदी स्पीकिंग स्पीकर्स इन व्हाट स्ट्रीट्स इन मुंबई, इन महाराष्ट्र. रिसेंटली दीज इंसिडेंट्स हैव केम फॉर दैट यू हैव टू स्पीक मराठी इफ यू वांट टू लिव इन महाराष्ट्र, you have to speak Kannada if you have to live in Bengaluru. So these kind of issues were also there. They are also right now as we speak. They are there in India. इसके अलावा you have many other such examples that you can cite. These days, our Rasgulla has become a source of dispute. Between whom? Between a state of Odisha and the state of West Bengal. Intellectual property rights के ऊपर विवाद है. Basmati rice, for example, Madhya Pradesh is one of the state which wants the GI tag for its basmati rice. There are only 7 states in India which have the tag for basmati rice, GI tag, geographical indication tag. But Madhya Pradesh don't have, so they are protesting against Punjab, for example. So इस तरह के issues भी है जिनके ऊपर interstate regionalism हावी होता है. Territorial disputes हैं. बेलगांव जो कर्नाटका का एरिया है वहां पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजोरिटी में है. सो महाराष्ट्र वांट्स दैट एरिया इनटू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे बिटवीन आसाम एंड मेघालय, आसाम एंड नागालैंड, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर एंड इंटरस्टेट रीजनलिज्म इससे और बढ़ता है. रिजर्वेशन की अब बातें की जा रही है कि 75% रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर व्हाट? डोमेस्टिक वर्कर्स जो डोमिसाइल्ड है उनको. Hate speeches are being given, street violence are being conducted. तो इस तरह से जो challenges हैं वो भी हमारे सामने निकल के आ रहे हैं इंटरस्टेट रीजनलिज्म के कारण. लोगों की पिटाई हो रही है, रसगुल्ला के पीछे फाइट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है. जो बेनिफिट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के, जॉब्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसके पीछे इंडिया में एक दीज डेज नेटिविस्ट टेंडेंसी जो है काफी हाई हैवी है और वो रीजनलिज्म का फॉर्मेट ले लेती. सो यू हैव टू स्पीक कन्नड़ा इफ यू वांट टू लिव इन बेंगलुरु एंड अर्न मनी देयर. मनी इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेरी गुड इन बेंगलुरु. व्हाई? बिकॉज इट्स अ मेट्रोपोलिस. इट्स ए बिग सिटी व्हिच ऑफर्स डायनामिक जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आपको वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो यू शुड स्पीक व्हाट? कन्नड़ा. अगर आप महाराष्ट्र आना चाहते हैं तो आपको क्या आनी चाहिए? मराठी. तो इंटरस्टेट रीजनलिज्म का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. एंड प्लस यूपी एंड बिहार जो वर्कर्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे गेट अब्यूज्ड अ लॉट ऑन सोशल मीडिया, अदरवाइज आल्सो ऑन द स्ट्रीट. तो इंटरस्टेट रीजनलिज्म का ये एक एग्जांपल है. प्रेजुडिसेस, बायस्ड जो एक व्यू पॉइंट होता है अबाउट पीपल फ्रॉम सर्टेन रीजन, दे आर unhygienic, they involves in criminal enterprises, their population is simply too huge, they are casteist so they don't go
for development in their own state and then they run away from their home states and come here and take away our jobs. ये क्या है? इंटरस्टेट रीजनलिज्म है. नेगेटिव जनरली इसका जो कॉनोटेशन है वो जनरली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज इंडिया में लिमिटेड है. ये बात हमेशा हमें समझनी है. रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास लिमिटेड होंगे क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है. 2.4% आपके पास टोटल वर्ल्ड एरिया है और 17 to 18% दुनिया की आबादी आपके देश में रहती, हमारे देश में रहती. तो ये जो टाइप्स हैं रीजनलिज्म के, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम इन डेप्थ सो दैट यू हैव ए प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि रीजनलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रीजनलिज्म ये कहा जाता है कि इट्स कंडीशनड बाय इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज. सो डिस्पैरिटीज यहां पे शब्द इंपॉर्टेंट है. नेचर, इन नेचर देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस or diversity. That is the natural way of doing things. Natural way of doing things. There are multiple types of species on this planet. Flora, fauna, you go into it and you will find that जो nature है उसका default mode जो है वो diversity का है. Humans, we love uniformity. Uniformity. Because of differences, because of diversities, sometimes yes, there is an idea of discrimination, there is an idea of uneven development. तो जो disparities हैं, unhealthy differences जो हैं वो develop हो जाते हैं. अब विदर्भा, state of Maharashtra is the top level economy in India. $400 billion plus plus economy है महाराष्ट्र की. लेकिन अगर आप देखें उसमें भी वेस्टर्न महाराष्ट्र टेक्स द मैक्सिमम ऑफ द इकोनॉमिक पाई. व्हाई? क्योंकि मुंबई वहां पे लोकेटेड है. Vidarbha has been neglected. They don't feel a sense of economic justice with rest of Maharashtra. Marathwada you can also club into the same situation. तो उनको disparities feel होती हैं. They feel that they are very distant from where? Mumbai, जहाँ की जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है. तो disparity जो है, एक sense of injustice, वो सेंटर स्टेज में आ जाता है रीजनलिज्म के Southern India is doing very well in family planning और North India is not doing that well in family planning. तो उनका नंबर बढ़ता जा रहा है North Indians का. तो what will happen? Delimitation will take place. तो लोकसभा की सीट्स नॉर्थ में और बढ़ जाएंगी. सेंस ऑफ इनजस्टिस हुआ ना कि दैट यूनियन ऑफ इंडिया वाज पुशिंग अस, कम करो जनसंख्या कम करो, एंड वी डिड ग्रेट देयर. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दोज हु परफॉर्म्ड वेल, they are being penalized, they are being punished with what? Less number of seats in Lok Sabha. एक साइकिक फिनोमेना लाइक नेशनलिज्म, इट्स ए साइकिक फिनोमेना, इट्स इन योर माइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच, क्योंकि डिफरेंसेस हैं इंडिया में. ये बात जो कही जाती है कि कश्मीर को एक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या वो आजाद होना चाहिए इसलिए क्योंकि वो इंडिया से डिस्टिंक्ट है, या सेम गोज फॉर पंजाब और सेम गोज फॉर some state in northeast. This is an absurd idea. Why? Because all of us are different. Name one state which has exceptional uniformity. Name one state. Within 50 or 70 kilometers, we change our dialect, we change our clothing patterns also, we change our food choices also. So within states also there is a huge diversity. तो ये बात कहना कि पंजाब अलग है या कश्मीर अलग है, जहां सेसेशनिस्ट मूवमेंट चले हैं, ये absurd बात है. इंडिया में सब कुछ डाइवर्स है. क्या असमीज लैंग्वेज अलग नहीं है बिहारी से? तो एक साइकिक फिनोमेना है जो कि ये डेवलप होता है. विद इन योर माइंड यू बिलीव इन इट. आउटसाइड वर्ल्ड में जो रियलिटी है इट इज वेरी डिफरेंट. इट इज बिल्ड अराउंड एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एज वेल एज लॉयल्टी टू द रीजन. इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं ग्रुप आइडेंटिटी के. मराठी आइडेंटिटी इज व्हाट? ग्रुप आइडेंटिटी. तमिल आइडेंटिटी इज व्हाट? ग्रुप आइडेंटिटी on the basis of language. In Punjab, ethnicity, that is caste यहाँ पे, जाट और religion, Sikh, जाट Sikh. Khalistani movement was centered around this particular group. It presupposes the concept of development of one's own region without taking into the consideration the interest of the rest of them. Water resource जो disputes हैं, ये क्या है? ये कावेरी को लेके dispute है. अब बोथ कर्नाटका एंड तमिलनाडु वांट्स कावेरीज वाटर, लेकिन लिमिटेड है वाटर. तो तमिलनाडु विल प्रेफर कि हर ओन पीपल शुड गेट वाटर फर्स्ट.
कर्नाटक का क्या होता है वो जाने, कर्नाटक वाले। दिस इज वॉज द आइडिया इज, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दिस इज द आइडिया हियर, दिस इज नथिंग नेगेटिव इन इट until ये एक्सट्रीम फॉर्मेट इसका ले ले। दिस इट्स वेरी गुड टू पुट फॉरवर्ड योर व्यू पॉइंट्स एंड डू योर जॉब। दिस इज द जॉब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिप्रेजेंट द पीपल्स इंटरेस्ट, जिन्होंने उनको वोट किया है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को तमिलनाडु के कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले वोटर्स ने वोट किया, ये उनका जॉब है, उनका धर्म है टू प्रोटेक्ट द राइट्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट until unless ये exceptionally इसका violent format नहीं आ जाता, and it prohibits its people from other regions to be benefited by particular reasons। जैसे इकोनॉमिक जो माइग्रेशन इंडिया में होता है वो प्राइमरली इसी इशू के अराउंड आपको दिखाई देगा। दे डोंट वांट अदर्स टू बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशंस, जो एडवांटेजेस निकल के उनके लिए उनके पास आए हैं। उनके रीजंस पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए, वहां ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। अब इंपैक्ट क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन, इज इट ए बून और इज इट ए बेन? तो रीजनलिज्म इज नीदर गुड नॉर बैड, it all depends in the context in which it is being spoken, it all depends on the issues which it is raising, it all depends on the objectives the particular movement has। तो गांधी जी, as I said, believed in what? Regionalism in a way is a good thing if you see from this point of view, Gandhi's point of view। In 1920 Nagpur session, he favored the constitution of the Provincial Congress Committee PCC on linguistic basis। He was a strong believer in what? Autonomy of different areas। He was a strong believer on decentralization। He was a strong believer on what? Grassroots development। It was Gandhiji। Pandit Nehru, if you just take him, he also believed that regionalism is good, but like all post-colonial leaders, those who have suffered partition, उनको मन में था कि रीजनलिज्म जो है ये नेगेटिव कॉनोटेशन ना लेने पाए, बिकॉज ही बिलीव्ड इन व्हाट? सेकुलर नेशनलिज्म। सेकुलर नेशनलिज्म ही बिलीव्ड इन, एंड दैट इज व्हाई जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन के बारे में चर्चा उठी तो उन्होंने अपोज किया, जेवीपी कमेटी, ही अपोज्ड इट, in which Sardar Patel was there, Jawaharlal Nehru and Sitaramaiah। So JVP committee was there in 1948. He opposed it, the formation of linguistic states, because he believed it can spiral on and become sub-nationalist, secessionist movements। Challenge was what? To secure the integrity of India post-partition। और अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ही बिलीव्स इन व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन करना, मार्जिनलाइज सेक्शंस को एम्पावर करना। तो उसके लिए उनका बिलीव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर आप देखें जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की, ही अपोज्ड द वर्ड ऑफ फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 जो है हमारा वो है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया प्योर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे अमेरिका है, यहां पे चीजें डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। सो यू सी द आइडिया एंड आइडियोलॉजी एंड बिलीव्स ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट लीडर्स इन इंडिया। C. Rajgopalachari was a mold of what? Gandhi and Nehru combined, the first and a very important leader from Tamil Nadu, उस टाइम का मद्रास स्टेट। तो पॉजिटिव जो इंपैक्ट इसका पड़ता है रीजनलिज्म का, वो होता है आपके डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज में। जहां पे रीजनलिज्म स्ट्रांग होता है वहां डेवलपमेंट ज्यादा बढ़िया होता है। ये हम कहते हैं बात, चर्चा उठती है नेशन स्टेट की, राइट? नेशन स्टेट, मॉडर्न जो कंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं व्हाट? नेशन स्टेट। वी कॉल देम नेशन स्टेट। दैट इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल became a nation, that we have a common sense of shared destiny or shared history as Indians. Our identity as Indians got built up,
एट द ग्रास रूट लेवल। बाद में हमारा भारत का गणराज्य बना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्टेट बना। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये स्टेट नेशन है, जहां पे स्टेट है, जैसे तमिलनाडु स्टेट है, वहां पे सब नेशनलिज्म है। तो आप देखेंगे कि ऐसे स्टेट्स में जहां रीजनलिज्म ज्यादा हावी है, वहां डेवलपमेंट के ऊपर काफी पॉजिटिव रुख रखा जाता है। इसीलिए आप देखते हैं तमिलनाडु इज वे अहेड कंपेयर टू मेनी ऑफ द स्टेट्स इन एसडीआई नंबर्स एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। सो पॉजिटिव इंपैक्ट डेवलपमेंट के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर पड़ता है। बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म यू हैड फजल अजली कमीशन, और बाद में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है भारत के अंदर 1956 में जो होता है। बाद में भी गो फॉर क्रिएटिंग फार मोर स्टेट्स। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है रीजनलिज्म का, विच इज ए वेरी गुड थिंग। इसका एक और इंपैक्ट होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर। दिस कंपटीशन इज व्हाट? हेल्दी कंपटीशन। तो यूपी और महाराष्ट्र कंपीट कर रहे हैं कि हु विल बिकम द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी फास्टर। ये एक इंपैक्ट निकल के आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है रीजनलिज्म का जो निकल के आता है भारत के अंदर। अदर एरियाज लाइक स्पोर्ट्स, लाइक अट्रैक्टिंग एफडीआई, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, कैटलाइजिंग एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइडिंग जॉब्स, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म काफी डोमिनेंट है, जो कि एक अच्छी चीज है। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है रीजनलिज्म का आपके लिए। कल्चरल जो मार्कर्स होते हैं उनके ऊपर प्राइड होना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। So these kind of positive impacts we have because of regionalism in India. एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है आपका कोलिशन पॉलिटिक्स का। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया। तो इंडिया में पर्टिकुलरली 1990s के बाद से टिल 2014 अगर आप देखें, 1989 से 2014 तक प्राइमरली वी हैड व्हाट? कोलिशन पॉलिटिक्स। यूपीए, एनडीए, ये क्या है? मल्टीपल पार्टीज यहां मिलकर सरकार बनाती थी। NDA is what? National Democratic Alliance. UPA was what? United Progressive Alliance. तो मल्टीपल पार्टीज यहां गवर्नमेंट का हिस्सा होती थी। दे हैड प्रॉपर पावर शेयरिंग, तो दे हैड सेंस ऑफ इंक्लूजन इनटू द पावर मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट आप मान सकते हो इसको। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कोलिशन पॉलिटिक्स का होना अच्छी चीज है। अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है रीजनलिज्म जब होता है, तो ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट में। देन यू हैव नेगेटिव इंपैक्ट्स एज वेल। डेफिनेटली देयर इज नेगेटिव इंपैक्ट। ये जो फेडरलिज्म है, कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट वाला फेडरलिज्म बन जाता है, जहां आपस में स्टेट्स लड़ रहे हैं, जैसे लैंग्वेज की बेसिस पे, वाटर रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था क्योंकि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वाज नॉट साइनिंग ऑन मल्टीपल बिल्स पास बाय तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। They say that they will not teach Hindi in the schools. The rest of the country has 3 language policy. Tamil Nadu has 2 language policy. So ये भी एक एस्पेक्ट निकल के आता है, नेगेटिव इंपैक्ट जो आता है। सब नेशनलिज्म मजबूत होता है यहाँ तो यू डोंट फील सॉलिडारिटी विथ रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट भी कई बार जाता है। जैसे सिविल वॉर हुई तमिलनाडु के श्रीलंका के अंदर, तो वहां जो तमिलियन ग्रुप्स थे, दे वर सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लिट्टे, एलटीटी, प्रभाकरन, they were a Tamil group who was fighting for independence from Sinhala majority Sri Lanka. They were taking refuge in the state of Tamil Nadu. Ideological support भी उनको local level पे मिल रहा था। So all in all international impact भी इसका निकल के हमारे सामने आता है। Negative impacts में ये सारे impact आएंगे। जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके लिए लाइफ टफ हो जाती है। एक नेशनल जो यूनिटी है, कोहेजन है, वो डिसरप्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स जैसे सिचुएशन भी खड़े हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट होता है, लोगों की जानें भी जाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। कावेरी को लेकर जब डिस्प्यूट सड़कों पे होता है तो इस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट भी रीजनलिज्म के लिए इंडिया में है। इंडियन नेशनलिज्म के साथ इसका जो रिलेशन है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे,
फ्रेगमेंटेशन होती है हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसकी। और नेशनलिज्म के साथ जो इसका रिलेशन है, नेशनलिज्म इज व्हाट, अगेन एन आइडियोलॉजी व्हिच इज बिल्ट अराउंड व्हाट, दिस वर्ड नेशन। नेशन इज व्हाट, एन इमेजिन्ड आइडिया, इमेजिन्ड कम्युनिटी इज नेशनल कम्युनिटी। आप साइकिक एक्सपीरियंस है ये भी, दैट आई एम एन इंडियन, civilizationally, politically, I'm an Indian. So whenever some Indian get harmed any place around the world, I feel a sense of sympathy, I feel a sense of loss, personal loss. Nationalism, that Marathi speaking, Tamil speaking, Telugu speaking, Punjabi speaking people are my brothers and sisters. We are one country. ये नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म जो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क बनाता है, इंटरनल यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेगेटिव जो रीजनलिज्म है इसको इंपैक्ट करता है। पॉजिटिव रीजनलिज्म जो होगा, जैसे मल्टीपल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑटोनॉमी उनको दी गई, वो एक सेंस ऑफ इंक्लूजन उनके अंदर आता है, तो दैट इज ए समथिंग विच फेवर्स नेशनलिज्म। जो पॉजिटिव होगा रीजनलिज्म, अगर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया, जो कि है, और कोलिशन डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स होती है, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, एक सेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस है पावर को लेके, तो वहां पे वो नेशनलिज्म को मजबूत करेगा, क्योंकि सेंस ऑफ ग्रीवियंसेस नहीं होंगी। लेकिन अगर नेगेटिव है ये और सेंस ऑफ ग्रीवियंसेस हैं, तो वो नेशनलिज्म को कमजोर करेगा, इट विल वीकन सब द नेशनलिज्म। सो इट हैव ए लव एंड हेट रिलेशंस विद नेशनलिज्म। एंड फेडरलिज्म ऑल्सो इट हैज ए वेरी यूनिक रिलेशन। सो फेडरलिज्म को ये मजबूत करता है जो रीजनलिज्म होगा आपको। फेडरलिज्म इज व्हाट, द डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स, इसका डिवीजन एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल बॉडी लेवल। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट and central parliament. At the state level we have state governments and state legislative assemblies, and at the local level we have panchayati raj institutions and urban local bodies. So financial, executive, legislative power का division is what federalism. फेडरलिज्म को मजबूत करता है रीजनलिज्म, क्योंकि डिमांड होती है ज्यादा ऑटोनॉमी की, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की। ये जो डिमांड्स है ये निकल के आती हैं कि फाइनेंस कमीशन शुड गो फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। Some states demand that they should have a special status, special category status. तो इस तरह से इश्यूज डेवलप होते। आपसे जो सवाल है, इट वुड बी आस्क्ड अराउंड, सेंटर्ड अराउंड दीज इश्यूज। कैसे रिफ्लेक्ट होती है डिमांड फेडरल रीजनलिज्म की इंडिया में? तो आप बात कर सकते हो कि स्टेटहुड की डिमांड होती है, यस, तभी हम स्टेट्स बना रहे हैं। लेटेस्ट स्टेट जो बनाया गया, अगर स्टेट नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई लद्दाख की 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर से उसको अलग किया गया। तो दैट हैज बीन देयर। प्लस देयर इज डिमांड्स फॉर इन विद इन स्टेट, देयर इज डिमांड फॉर न्यूअर स्टेट लाइक विदर्भा और गोरखालैंड। स्टेट्स की डिमांड होना, कई यूनियन टेरिटरीज की डिमांड होना कि उनको और पावर्स दी जाएं, ये सब क्या है? रीजनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। ऐसे मैनिफेस्ट होता है रीजनलिज्म इंडिया में। स्पेशल कैटेगरीज की डिमांड होती है दैट वी शुड गिव मोर ऑटोनॉमी, मोर डिसेंट्रलाइजेशन। सो आर्टिकल 371 ए से लेके जे तक, इसी में यहां पे मेंशन किए गए आर्टिकल्स। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल बी डिमांडेड, लेस इंटरफेरेंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नर का रोल कम होना चाहिए, बाकी जो पंछी अवसर करिया कमीशन है इनके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, एक्सेट्रा। ये यहां से निकल के आते हैं। मोर से in local politics, less interference from the central government. इस तरह से रीजनलिज्म रिफ्लेक्ट होता है। नेगेटिव वे में रिफ्लेक्ट होता है जब सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं, एंटी माइग्रेशन जो एटीट्यूड है वो हार्डन्ड अप होते हैं, मिलिटेंसी डेवलप होती है, इंसर्जेंसी डेवलप होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में है। द लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी इन इंडिया इज नागालैंड बेस्ड इंसर्जेंसी। तो नेशनल यूनिटी को लेके उसमें नुकसान उसको होता है। तो आपको यहां समझना है जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइडिया है, दैट वी आर वेरी डिफरेंट पीपल एंड वी एंजॉय दोस डिफरेंसेस, वी आर इन दैट वे वेरी क्लोज टू नेचुरल स्टेट ऑफ जो एग्जिस्टेंस है उसकी। लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस, ज्योग्राफिकल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल रीजंस, ये सारे रीजंस मिलके समटाइम्स लीड्स टू ए सिचुएशन जहां पे
ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी चीज है, ग्रास रूट डेवलपमेंट अच्छी चीज है। गांधी जी दैट इज वाई अंडरस्टूड द वेरी असेंस एंड नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, and that is why he is very very relevant even now. So you will write that regionalism is neither good nor bad. It depends on the context, it depends on the objectives and the goals the particular movement may have. Clear hai? So that is how will write in this particular topic. I hope all of you understood the gist of the topic and comprehend जो यहाँ पे कोर बात निकल के आ रही है। तो फेस्टिवल्स हों किसी भी तरीके के, या फिर कस्टम्स हों या नॉर्म्स हों, चाहे वो मेघालय में है या नागालैंड में है या जलीकट्टू हो रहा है तमिलनाडु के अंदर, these things they turn negative when people who believe in those ideas they come forward and वो जो ओरिएंटेशन है उस मूवमेंट का उसको नेगेटिव ले जाते हैं। डिमांड हमेशा से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की रही है, हिस्ट्री हमें हमारी बताती है और आगे भी रहेगी। तो रीजनलिज्म कैन बी ए फ्रेंड एंड ए फो depending on the context and the situation. That's all for this lecture. You can join me on my Telegram channel also, and I'll meet you again at the same platform, SRIRAM IAS, tomorrow or day after tomorrow at 8 p.m. with a new topic in Indian society, Mains 2025.